गुड मॉर्निंग क्लास 8। आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जिसमें मैंने आपको लॉन्ग आंसर करा रही थी क्लास। आपका एक लॉन्ग आंसर मैंने कंप्लीट करा दिया था जिसमें मैंने आपको कराया था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में डिफरेंस। ये आपका कंप्लीट हो गया था। अब सेकंड लॉन्ग आप नोट डाउन करिए। सेकंड लॉन्ग आपका बुक में दे रखा है, बुक में पेज नंबर 41। ठीक है, पेज नंबर 41 निकालिए। 41 में फर्स्ट वाला जो दे रखा है आपका एक्सरसाइजेस दे रखा है ऊपर, उसमें फर्स्ट वाला जो लॉन्ग दे रखा है, व्हाई डू यू थिंक आवर नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव टू हैव अ राइट टू वोट। ठीक है, ये आपका लॉन्ग आंसर सेकंड है। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है पेज नंबर 41 पे, ध्यान से सुनिए। व्हाई डू यू थिंक आवर नेशनल मूवमेंट supported the idea that all adults have a right to vote। इसमें पूछा गया है आपको क्यों लगता है कि हमारे एक राष्ट्र जो अभियान के लिए नेशनल मूवमेंट हमारा जो है क्यों सपोर्ट करता है कि जितने भी एडल्ट हैं उन्हें जो है वोट करने का अधिकार है। अब हम लिखेंगे आंसर इसका। ठीक है, आंसर लिखिए इसका। मैं बोल रही हूँ आपको, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। द नेशनल मूवमेंट fought for independence from British rule। The nationalist movement fought for FOUGST fought। The nationalist movement fought for independence from British rule। The people of India wanted to get the people of India wanted to get rid of the British because they did not agree with the decisions imposed on them। imposed मतलब उनके ऊपर जो जबरदस्ती डिसीजन उनके ऊपर डालना, IMPOSD, imposed on them and had no role in the decision making process either and had no role in the decision making process either। एक बार बोल रही हूँ ये लाइन। द नेशनलिस्ट मूवमेंट fought for independence from British rule। The people of India wanted to get rid of the British because they did not agree with the decisions imposed on them and had no role in the decision making process either। So the nationalist movement supported universal adult franchise, full stop। Through this, every responsible adult could participate in the government and its decision making। Could participate in the government and its decision making। ठीक है, एक बार और बोल देती हूँ। The nationalist movement fought for independence from British rule। The people of India wanted to get rid of the British because they did not agree with the decisions imposed on them and had no role in the decision making process either। So the nationalist movement supported universal adult franchise, full stop। Through this, every responsible adult could participate in the government and its decision making।
ठीक है। ये हो गया आपका लॉन्ग नंबर सेकंड कंप्लीट। ठीक है, आपके 2 लॉन्ग मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। एंड देन आप लोग लास्ट वन। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ इज गवर्नमेंट फॉर्म इन द डेमोक्रेसी। हाउ इज गवर्नमेंट फॉर्म, हाउ इज गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट कैसे, डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट किस तरीके से बनाई जाती है। हाउ इज गवर्नमेंट फॉर्म इन द डेमोक्रेसी, लास्ट आपका। ठीक है, लास्ट लॉन्ग है आपका। इन अ डेमोक्रेसी, द इन अ डेमोक्रेसी government is formed after election. In a democracy, government is formed after elections. Full stop. After the elections, a list is prepared which indicates the winner of each Lok Sabha seat. Full stop. After the election, a list is prepared which indicates the winner of each Lok Sabha seat. Full stop. These winners, these winners become the member of parliament. These winners become the member of parliament. Full stop. The political party with the majority, the political party with the majority of these MPs forms the government. The political party with the majority of these MPs forms the government. ये पैराग्राफ है आपका। अब जब नेक्स्ट लिखोगे पैराग्राफ चेंज करना है आपको। तो ये वाला पैराग्राफ जो अभी मैंने कंप्लीट करा है, एक बार मैं और बोल देती हूँ। इन अ डेमोक्रेसी, government is formed after elections, full stop. After the elections, a list is prepared which indicates the winner of each Lok Sabha seat, full stop. These winners become the members of parliament, full stop. The political party with the majority of these MPs, the political party with the majority of these MPs forms the government, full stop. Next paragraph change. Since there are 543 seats in Lok Sabha, since there are 543 seats in Lok Sabha, a party must secure at least half, that is, i.e., that is 272 seats in parliament to form government. मैंने आपको बताया कि जिसमें लोकसभा में 543 सीट्स होती हैं टोटल। अगर मेजॉरिटी जीतनी है किसी पार्टी को, मेजॉरिटी आप मतलब मेजॉरिटी मिलने के बाद उसको पार्टी को जो है विनर बनाया जाता है। ठीक है, तो जब किसी पार्टी के पास 543 की हाफ सीट होंगी, यानी कि 272 सीट होंगी, तो वो पार्टी जो है विनिंग पार्टी कहलाई जाती है। एक बार और बोल देती हूँ लाइन। सिंस देयर आर 543 सीट्स इन लोकसभा, a party must secure at least half, that is 272 seats in parliament to form government, full stop. Sometimes no single party is able, sometimes no single party is able to win 272 seats on its own and get the majority to form the government on its own and get the majority to form the government, full stop. In that situation, two or more political parties with similar concerns, in that situation, two or more political parties with similar concerns join together to get the majority and form a coalition government. Similar concerns join together
to get the majority and form a coalition government. ठीक है, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ये वाला. Since there are five, एक बार क्वेश्चन पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए. In a democracy, government is formed after election. After the election, a list is prepared which indicates the winner of each Lok Sabha seat. These winners become the members of parliament. The political party with the majority of these MPs form the government. Paragraph change. Since there are 543 seats in Lok Sabha, a party must secure at least half, that is 272 seats in parliament to form government. Sometimes no single political party is able to win 272 seats on its own and get the majority to form the government. In that situation, two or more political parties with similar concerns join together to get the majority and form a coalition government. ये आपका हो गया हाउस डेमोक्रेसी फॉर्म्ड इन अ डेमोक्रेसी. गवर्नमेंट किस तरीके से डेमोक्रेसी. लॉन्ग आंसर्स क्लास आपके 3 लॉन्ग आंसर्स कराए मैंने आपको, वो कंप्लीट हो गए हैं. ठीक है, अब आपका है हॉट. हॉट लिखना है आपने पेज नंबर 40. पेज नंबर 40 पे साइड में क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई डू यू थिंक देयर आर सो फ्यू वुमेन इन पार्लियामेंट. डिस्कस. पार्लियामेंट में जो है इतनी कम विमेन क्यों होती हैं. ठीक है, आपको क्यों ऐसा लगता है. तो ठीक है, आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया, व्हाई डू यू थिंक देयर आर सो फ्यू वुमेन इन पार्लियामेंट. डिस्कस. ठीक है, आंसर बोल रही हूँ उसका मैं. हॉट है आपका, there are very few women in the Indian Parliament. There are very few women in the Parliament, in the Indian Parliament, despite women comprising half of the country's population. There are very few women in the Indian Parliament despite women comprising half of the country's population. Full stop. This is because they face a lot of discrimination in society irrespective of political equality. This is because they face a lot of discrimination in society irrespective of political equality. ये वाला पैराग्राफ दोबारा मैं बोल रही हूँ. There are very few women in the Indian Parliament despite women comprising half. Comprising की स्पेलिंग एक बार देख लें. comprising. ठीक है, comprising half the country's population. This is because they face a lot of discrimination in society irrespective of political equality. Full stop. Are patriarchal society still cannot accept women in roles of political leaders or rulers. Our patriarchal society still cannot accept women in roles of political leaders or rulers. Full stop. Women are still expected to remain confined to domestic affairs. Women are still expected to remain confined
remain confined to domestic affairs, full stop. That is why there are very few women in parliament. That is why there are very few women in parliament. तो उसके बाद उसने पूछा है कि आप क्यों ऐसा क्यों लगता है कि जो पार्लियामेंट में जो है विमेन जो है उनकी नंबर ऑफ विमेन कम होती हैं, क्यों? देखो, देयर आर वेरी इंडियन पार्लियामेंट में वुमेन इसलिए कम होती है, हमारी देखो कम होती हैं, जबकि देयर आर वेरी फ्यू वुमेन इन द इंडियन डिस्पाइट वुमेन कंप्राइज हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। देखो, हमारे इंडियन पार्लियामेंट में वुमेन कम है, जबकि आधी पॉपुलेशन हमारी वुमेन की ही है, और इवन ज़्यादा भी हो, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी इन वुमेन ही है। दिस इज बिकॉज इसी वजह से भी, क्योंकि जो है इंडियन जो पॉलिटिकल इक्वालिटी से देखा जाए, अगर राजनीति के उसमें तौर पे देखा जाए नजरिए से, जो अगर वुमेन कोई होगी वो पॉलिटिक्स में है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस सोसाइटी में अगर कोई भी नेता है या कम है, देखो जो है वो एक उन्होंने अपनी स्ट्रगल से मेहनत से वो पहुंची है। लेकिन अगर कुछ हमारी अभी भी कोई ऐसी सोसाइटी में जो है वुमेन को जो है जो इस तरीके से इस स्टेज पे नहीं देख सकती हमारी सोसाइटी जो एक तरीके से वुमेन और मैन इनमें डिस्क्रिमिनेशन करेगी, कि मतलब उनका कहना ये होगा कि अरे तो औरत है और वो ये इस तरीके से जो है जो राजनीति कर रही है और इस तरीके से काम कर रही है, लोग तरह तरह के डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो हमारी जो पैट्रियार्चल सोसाइटी है, यानी कि हमारी जो पॉलिटिक्स के में जो है वो कोई भी हमारी सोसाइटी जो है वुमेन को एक पॉलिटिकल लीडर या रूलर के रूप में नहीं देखना चाहती, उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है। वुमेन आर स्टिल एक्सपेक्टेड टू रिमेन कन्फाइंड टू डोमेस्टिक अफेयर्स। आज के टाइम में भी जो बहुत सारे सोसाइटी जो है हमारी सोसाइटी बस यही चाहती है, यही सोचती है, यही एक्सपेक्ट करती है कि विमेन जो है डोमेस्टिक अफेयर्स में बिजी रहे, यानी घर के कामों में ही वो बिजी रहें और वो बाहर नहीं निकलें ज़्यादा, और उनसे जो काम दिया गया है वो वही करें। दैट इज़ वाई देयर आर वेरी फ्यू वुमेन। लोगों की यही सोचने, जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं वुमेन जो है सिर्फ घर में बैठने के लिए, घर के कामों के लिए बनी है, तो वो भी जो है वो इसी जो सोच की वजह से लोगों की जो वुमेन जो है वो पार्लियामेंट में मेंबर या इसलिए कम है, वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाती हैं, इसीलिए उनकी संख्या जो है वो नंबर ऑफ वुमेन जो है वो पार्लियामेंट में कम है, लोगों की हमारी सोसाइटी की इसी सोच की वजह से। ठीक है क्लास, आपका मैंने चैप्टर फिनिश करवा दिया है, जिसमें लॉन्ग वेरी शॉर्ट मैंने आपको करवा दिए थे, शॉर्ट लॉन्ग और हॉट मैंने आज करवा दिए हैं। तो क्लास अब नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 4। क्लास जितना आज चैप्टर में मैं करा दिया है मैंने, उतने चैप्टर आपको उतना वर्क कंप्लीट रखना है। ठीक है, आपको उतना वर्क कंप्लीट करना है। जब आपसे वर्क कॉपीज करेक्शन के लिए मंगाया जाएगा तो ऑल यू हैव टू कंप्लीट इट योर वर्क। ठीक है, सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी अपना वर्क पेंडिंग नहीं रहेगा, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मैम जब बोलेंगी, ये स्कूल से जब बोला जाएगा तब काम करेंगे। नो क्लास, आपको अपना वर्क टाइम टू टाइम करना है। आज मैंने चैप्टर फिनिश करा दिया है, आप अपने चैप्टर कल तक फिनिश कर लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन आप ले लो, 1-2 दिन के अंदर आप ये अपना चैप्टर फिनिश कर दिएगा। आपके पास टाइम ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं आप लोगों को किसी की कॉपी की ज़रूरत। अब आपके पास वीडियो है, वीडियो एक बार नहीं आप 10 बार देखो। आपके पास रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग में आप एक बार नहीं 10 बार अपने जो भी आपका जो डाउट्स हैं वो क्लियर करो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया है आप उसको 10 टाइम्स देखिए। जितनी बार में आपको समझ में आए आप उतनी बार देखिए, तब भी समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हैं आप अपनी क्वेरीज। तो क्लास आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट है और मैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूंगी आपका नेक्स्ट क्लास में, जो कि अंडरस्टैंडिंग लॉज। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपका इसी 3rd चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है थोड़ा। इसमें पार्लियामेंट के बारे में बताया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि लॉज जो है वो क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सारा आप जो प्रोसीजर है वो पढ़ोगे। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास।